chlorine. Okay, so we'll start this. For this, you need two things. Okay, very efficiently. First thing that you have is the IUPAC nomenclature. You should be very much comfortable with IUPAC nomenclature. That means you should be able to draw the structures from name to structure. This you should be able to do it. Okay, you can go from name to structure. If you cannot go from name to structure, then you don't even attempt any conversions, that I would suggest. Because if you are getting the structures wrong, then the whole thing will be wrong and you will get demoralized. You will be like, Sara chapter padh liya, fir bhi nahi aa raha. So the problem is not there in the chapter, it is in the IUPAC nomenclature. Okay. Next thing, reaction maps. So reaction maps can be either in your notebook or with you in a paper, or in exam it should be in your mind. Okay, the reaction maps, it should be in your mind. Then for the first time, haloalkane halorine, here we have 30 questions. In NCERT, there are 30 conversions that we have to do. Out of these 30, there are 2 repeated ones. Okay, so unique, we will have only 28 unique conversions are there. Now, out of this 28 unique conversions, we will look at patterns. Okay, that means what are the reactions that are frequently used in conversions? Okay, that are frequently used in conversions, and you will focus more on those reactions, and you will think for all the conversions. Whenever you get the conversion, you will have a few reactions, few handful of reactions that will be used in many conversions. Okay. So you will keep in mind those reactions. I know. So when I say that reaction map should be present in your mind, I'm talking about those patterns that should be present, not all the reaction. Okay, those patterns that you should be having in your mind. Okay. So with this, you have the reaction maps, and I will help you here for IUPAC nomenclature. I will draw the structures, and you have the reaction maps. Okay. Now let's look at the first question. What do we have here? Achha, one more thing that I have done here is to tell you, in NCERT there are 30 questions in which initially we have 10 questions and then we have 20 questions of conversions, and they are very randomly arranged. What I did, I arranged them in a manner that they are less complicated initially, and slowly they get a bit more complicated. That means they involve a bit more step. So the initial ones will be only of 1 step or 2 steps. The next one will be of 3 steps. Then the next one will be 4 steps, and so on. Fine. So this is the way I have, and also I have clubbed them in a similar groups. For example, similar type of reactions I have done first, then again the next set of reactions they use similar type of reagents, so you understand the pattern in a more efficient way. Now let's look at the first reaction that we have, chloroethane to butane. So what is chloroethane? It is CH3, CH2, Cl, and we are going to CH3, CH2, CH2, CH3. Here we have 2 carbon atoms. Here we have 4 carbon atoms. What is the reaction that we can use in order to double the number of carbons? Hamza, tell me. Double the number of carbon atoms. What is the reaction that we can use? What is the reagent that we use to double the number of carbon atom? Hamza, Hiba, Krishna, Kulsum, please look at your reaction maps. What's reaction? What's reaction, right? Na and dry ether. Simple. So whenever you have to double the number of carbon atoms, so I'm not saying doubling the chain. Please remember that. What I am saying, I'm saying you have 2 carbons, and in total here you have 4 carbons. Then you have just the double of number of carbon atoms. Then you will think about sodium and dry ether. You will do that reaction. You will check whether it is happening or not. Okay. Now, similar to this reaction, we have 1 chlorobutane to N-octane. What is 1 chlorobutane? Chlorine. N-octane. 3, 4, 6, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. So here we have how many carbons? Here we have 4 carbons, and here we have 8 carbons. Again, which reaction? Tell me. Hiba. Hiba will tell me which reaction. Hiba. Yes, Hiba, which reaction? Double the number of carbon atoms. पहला reaction क्या attempt कीजिएगा आप? Yes, Hiba, very good. है ना? So see, just get your hand comfortable writing these type of things. Na and dry ether.
Na in dry ether. ठीक है? If you are not able to write, no problem. Concept समझ में आ रहा है? Yes or no? Please tell me. Krishna, Akshay, Yes, sir. Kulsum, Yes. है ना? Yes, sir. Okay, you are getting this right. So what I need is, even if you don't draw it, I want you to do this on your own. थोड़ा सा आप struggle करें, because देखिए यहाँ पे हम structure लिख दे रहे हैं, आपसे बस हम reagent पूछ रहे हैं, right? So you will be struggling somewhere. इतना fast आप नहीं कर पाएंगे, because you will struggle somewhere from the name to structure. Please remember that कि इतनी आसानी से नहीं होगा जितनी आसानी से हम कर रहे हैं. आप लोगों को structure में दिक्कत हो सकती है, थोड़ा याद करने में दिक्कत हो सकता है. Now 2-chlorobutane to 3,4 dimethyl hexane. 2-chlorobutane. We have the same thing. Rather than 1-chloro, we have 2-chlorobutane. 3,4 dimethyl hexane. So we can have hexane 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 3,4. So we have here CS3, and here have here CS3. Okay. Now here count the number of total carbons. Here we have 4 carbons. So here we have 1, 2, 3, 4, 5, 6 in the main chain. 7th carbon of CS3, 8th carbon here. So we have here 8 carbon atoms. Then you will try and attempt doing what? What's the reaction? So let us do, because we have 4 and 8 ना pattern दिख रहा है आपको 4 and 8. Then try Wood's reaction. Any in dry ether. So we'll have 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, and we will add these two. And why we are adding these two? Because these are the carbon atoms that contain chlorine. All of you remember this? Yes or no? Please tell me. Kulsum, Sayyida, Rofia. Yes, sir. Yes. Anna, you have done this type of reactions, right? I hope you remember. Now let us try to number it. 1, 2, 3, 4, 5, and 6. So what we are getting? We have methyl in the 3rd and 4th position. So 3, 4. Dimethyl. Hexane, because we have 6 carbon atoms. We can directly use Na in dry ether. Okay. Can I move on? Yes or no? Please tell me. Sir, should we note down? No. Don't note down. I will tell you when to note. These are a reaction, but note down. Okay. I will tell you when to note down. Benzene to biphenyl. Benzene, biphenyl. Again, I hope you can see Na in dry ether. This is the question that has been given twice. This is the repeated one. This is once given in the 10 set and then again given in the 20 set. In the 20 set, they have given diphenyl. Both of them, they mean the same thing. Okay. They mean the same thing. Any problem here? Yes or no? Please tell me. Any problem here? No. Sir, we should contact Oh yeah, sorry. My bad. Thank you. We cannot go direct here because we don't have the. Here we'll be using Cl2 in the presence of AlCl3. So this is from preparation of haloalkene. Sorry, preparation of haloarenes. And here you will be getting chlorobenzene, and then we can use. Thank you, Krishna. Dry ether. First will be Cl2, AlCl3. Second, we will be using Na in dry ether. Sir, can we use Br2 or FeBr FBr2 and FeBr3 na? and convert it into bromobenzene? The first step na? You're talking about the first step, right? Yes. First step, we can use the brominating reagents also. Now you will note here, whenever the carbon number is doubling,
think of sodium and dry ether. Okay, think of sodium and dry ether. So this is the point that you have to know. This is particularly important for conversions. Whenever the carbon number is doubling, think of using Na and dry ether in some way. Okay, so next question, dusra. Here we have 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 4 questions are there. 1, 2, 3, 4. Yeah, we have 4 questions out of 28 using Na in dry ether. So this is an important reaction, right? This is an important reaction. Now let's move on to the next one. Here we have but 1E to but 2E. Okay. Now, whenever the atoms are moving one places, then you will think of Markovnikov or anti-Markovnikov. Now, one of these things can happen. Markovnikov or anti-Markovnikov can happen. Now, when does Markovnikov happen? When you go from less to more. Anti-Markovnikov will happen when you go from more to less. Okay. So what is happening here? We are going from less substituted. We have here only one alkyl group. Here we have two alkyl group. So we are going from less substituted to more substituted. Less substituted to more substituted. That is why Markovnikov will be used. Let me show you how. See, the first reaction that I will be doing here is with HBr. Simple HBr. The Br will attach on here. Then I will be doing alcoholic KOH. Then I will get more substituted alkene. See, both of the reactions we have done already, yes or no? This HBr will be used in dark. If we use in the presence of light, I will be getting different product. Yes or no, Hamza, Heba? I hope you guys are recognizing the reactions. Yes or no, please tell me. Yes, okay. Done, yes or no, please tell me. इसको note down कर लीजिए आप. This is important. Whenever you have a difference of one carbon atoms, ना, यानी 1 से 2, 2 से 1 ऐसा हो रहा है अगर कुछ, then you will be using what? Either Markovnikov or anti-Markovnikov. Okay, Markovnikov or anti-Markovnikov. Done. Can I move on? Just a minute. Okay. Done, sir. Done. 2-methyl propene to 2-chloro 2-methyl propene. There will be a dash here. Okay, so let us look at the molecule. The molecule that we have here is 2-methyl propene. So we have propene, and here we have a CH3 group. 2-chloro 2-methyl propene. So we have propane. So we have a propane group, propane, and we have here CH3 and as well as chlorine. CH3 as well as chlorine. So that means the reaction is happening on this carbon atom, right? And what is getting added here? If you see here, we are adding a chlorine here and we are adding a hydrogen here, right? So what is getting added? अगर आप इसको खोल के लिखिएगा, so this will be CH3 carbon, CH3 CH2, and here we have CH3 carbon, chlorine CH3, and here we have CH3. This is double bond here. Okay, so what you can see, what is getting added? Here you have chlorine, and here what is getting added? Hydrogen. So, and this is what also Markovnikov addition. So you'll just add HCl.
We just start HCl. The negative part attaches on that carbon atom which has less number of hydrogen. When unsymmetrical alkene reacts with unsymmetrical reagent, then the negative part attaches on that carbon atom which has less number of hydrogen. Next, this is another question with Markovnikov or anti-Markovnikov addition. Okay, Markovnikov or anti-Markovnikov addition, second reaction. Okay, no need to write this. Okay, let's move on to the next one. But 1ene to N-butyl iodide. Now listen, but 1ene. N-butyl iodide. Okay, N-butyl iodide. Now I know that if I react this with just HI, and I can see that iodine is getting added here, H is getting added here. So I will get what? I will get more substituted. I'll get this product, right? So I don't want to do this. First of all, what I will be doing, I will be making a Markovnikov product, sorry, an anti-Markovnikov product like this. If I have a Br here, then it is easy to go from Br to iodine. See what are the reagents that we'll be using. We'll be using here HBr in peroxide, right? And here we'll be using what? Here we'll be using NaI in acetone as a solvent. Acetone is a solvent, not a reagent. Please remember this. Okay. Can all of you see this reaction happening? Do you have any doubt in this reaction? Yes or no? Please tell me. No, sir. No. So you see that it is addition, and it is happening in the which carbon? First carbon, and we can only have what? HBr reacts with alkene in the presence of peroxide, not any other thing. And we have to give what? Anti-Markovnikov product. So again we have anti-Markovnikov. So you can see that this reaction, anti-Markovnikov addition, you have to be very much comfortable with this reaction because it is getting repeated many times. Okay. Similarly, you will see the next one. 1 bromopropane to 2 bromopropane. What do we have here? One bromopropane to 2 bromopropane. Again, there is this change of 1 to 2. So either Markovnikov or anti-Markovnikov. Now you tell me here, we are going from less substituted to more substituted. तो बताइए कौन सा एडिशन होगा? Markovnikov और anti-Markovnikov? We want to go from less to more. Markovnikov, है ना? देखिए आ रहा है कन्वर्जन, yes or no? Please tell me now. Yes, sir. है ना? आ जाएगा, इसी तरह से घबराने की बिल्कुल बात नहीं. Just you have to recognize the pattern now. Okay, just you have to recognize the pattern. NCERT में is difficult because they have given इधर का रिएक्शन उधर है, उधर का रिएक्शन इधर है, बीच में आप तीसरा रिएक्शन करते हैं. पहला रिएक्शन उसमें बहुत टफ है. First reaction itself is so tough because it is from 11th standard. They are using reagents from 11th standard. वो तो याद रहेगा नहीं, हालोल्किन हालोरीन का याद नहीं रहता यहाँ पे बच्चों को. 11th का क्या याद रहेगा? Okay, that is why I have put it in such a manner that reactions are clubbed in a way you gain some pattern. Okay, so first of all, what we will be doing, I will get this product. अब देखिए हम backward जाते कैसे? How we go backward? I can get this product by using an alkene, and what I will be using here, I will be using HBr. अच्छा, अब alkene बनाने के लिए कौन सा reagent चाहिए होगा बताइए? How can we make alcoholic KOH? Very good. Alcoholic KOH, है ना? सबको दिख रहा है? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. Yes. Okay. देखिए, just let me know कृष्णा और जिसको भी अगर कहीं मिस्टेक हो सकता है ना, हड़बड़ी में क्या हो जाए कि हम कुछ रिएजेंट मिस कर जाए. Okay, some steps. Let me know अगर उस तरह का कुछ हुआ तो. अल्कोहलिक KOH से एल्कीन बन गया, एल्कीन से फिर HBr ऐड किया, ठीक है ना? HBr भी होगा, ये डार्क में होगा. This will be in dark. डार्क का मतलब लाइट वेट नहीं है. डार्क लिख लीजिएगा तो it will be better for you. आगे बढ़े. Should we move on? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. Yes. अब देखिए उल्टा हो गया, है ना? अब बताइए 2 से 1 जा रहे हैं. What will you use? Markovnikov या anti-Markovnikov?
So we are going from Anti-Morgan. more subject. Very good. सेम रिएक्शंस कर लीजिएगा खुद से अब ये वाला Br यहाँ पे पहले ही सेम अल्कोहलिक KOH से एल्कीन बना, उसके बाद Br, मतलब उस अब जब पैटर्न समझ में आ जाएगा ना, खेला खेला हो बे, व्हाट हो बे, खेला हो बे, alcoholic KOH and this is what, HBr, presence of peroxide. छापने की जरूरत तो है नहीं इसको। अब इसको देखिए, यहाँ पे दे हैव प्लेड, अभी तक तो आप लोग खेल रहे थे, यहाँ पे क्वेश्चनर हैज प्लेड, कुछ समझ में नहीं आ रहा अभी तक। यू हैव द गेम हियर इज दिस पार्ट, tertiary butyl and isobutyl. What are these things? What is tertiary butyl? 4 carbons. Butyl means 4 carbons. Very good. 4 carbon. And it should be such that it is tertiary. 4 carbons should be arranged in such a way that it is tertiary. So carbon, 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 carbon. हो गया tertiary. है ना? Carbons, 4 carbons arranged in such a manner that it is tertiary. And we add CH3, CH3, CH3 and Br. Tertiary butyl bromide. 2. Isobutyl bromide. What is iso? Iso is this group. ये अगर हुआ ना कहीं पे भी इस तरह से आपके पास कुछ भी हुआ, लेट मी गेट दिस डिफरेंट कलर, 11th क्लास वाले बच्चों को याद होना चाहिए, आइसोब्यूटल का कांसेप्ट बहुत पढ़ाया था हमने। इस तरह से अगर आपके पास कुछ भी हुआ, इट इज आइसो, बिकॉज अगर आप इसको सेपरेट कीजिएगा, हियर एंड हियर यू आर गेटिंग सेम ग्रुप्स। सो आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, ऐसा आइसो बनाना, यू हैव 4 कार्बन एटम्स। सो सी, oops, wait a second, इसमें पावर पॉइंट में इसकी दिक्कत बहुत है। CH3 उसको भी नहीं बनाते, पहले कार्बन कार्बन बनाते हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको नहीं पता होगा। आई हैव टू हैव 4 कार्बन, हाइड्रोजन सभी आप छोड़ दीजिए, कार्बन कार्बन कार्बन, 3 कार्बन हो गए। अब आप एक कार्बन ऐसा डालिए यहाँ पे, ठीक है, और इसी कार्बन से आप क्या जोड़ दीजिए, Br जोड़ दीजिए। जैसे अगर आप मान लीजिए आपने यहाँ पे जोड़ा होता Br लाइक दिस, तो ये देखिए इधर भी सेम ग्रुप्स हैं, इधर भी सेम ग्रुप्स है, जैसा नो, करेक्ट? Yes, sir. यहाँ पे क्या है, आइसोब्यूटाइल, बस हाइड्रोजन ऐड करते जाते हैं, H2 H3 H H3। नाउ इफ यू वांट टू नेम दिस, ये आपके पास क्या है, दिस इज मेन चेन, सो यू हैव हियर 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, ये है आपका क्या, दिस इज योर मेन चेन, बिकॉज यहीं पे सब्स्टिट्यूएंट है आपके पास, दिस विल बी 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। क्या चेंज हो रहा है, सब कुछ तो सेम है, क्या चेंज हो रहा है, 2 ब्रोमो इज गेटिंग 1 ब्रोमो। बताइए, मार्कोनिकॉव एंटी मार्कोनिकॉव? एंटी मार्कोनिकॉव, है ना? उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ऑल ऑफ यू गेट दिस, यस और नो? हमजा, कृष्णा, कुलसुम? Yes, sir. Yes, sir. है ना? सैयदा रूफिया आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सैयदा रूफिया, सैयदा रूफिया कंप्लीटली साइलेंट। देखिए, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अल्कोहलिक KOH से करेंगे तो फिर मिलेगा हमको ऊपर वाले के साथ ये कर देते हैं ना, CH3 कार्बन CH3 डबल बॉन्ड CH2, है ना? ऐसे कर दिया, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा ये प्रोडक्ट। रिएजेंट्स लिख लेते हैं यहाँ पे, reagent here it will be what, it will be alcoholic KOH, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा HBr in the presence of peroxide। Write this down, this is important. Can you see what is the game here? The game here is with naming. They have used common name so that you don't know what is tertiary butyl and what is isobutyl. So they are testing whether you know it is what is tertiary butyl and isobutyl, because आगे का काम तो ये, if you have identified the pattern, it is fine. Alcoholic KOH, देखिए ये कितना इस्तेमाल हो रहा है,
Alcoholic QH with anti-Markovnikov or Markovnikov. देखिए, one reaction. And what do we have? Second, third, fourth, because here it is also anti fourth, fifth, sixth. So we have seen here 6 reactions in which Markovnikov or anti-Markovnikov is fitting. Done everyone with this? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. Yes. अब देखिए 2 chloropropan, 2 chloropropan, my bad, 4 कार्बन बना दिया हमने. 2 propanol. फिर से देखिए क्या है, 2 और 1 है. हाँ, तो कहीं ना कहीं मार्कोनिकॉव यूज होगा ही होगा, इसको तो आप याद रख लीजिए. ये तो आइडेंटिफाई, ये तो ट्रांसफर करना बहुत ही आसान है कि क्लोरीन से OH कैसे जाएगा. लेकिन इससे पहले व्हाट यू हैव टू हैव अ haloalkene which is like this. You can do this, yes or no? Please tell me. यहाँ से यहाँ कैसे जाएंगे? Aqueous, NaOH और KOH. Yes or no? Please tell me. Yes, sir. यहाँ से यहाँ कैसे जाएंगे? Aqueous KOH. KOH और NaOH both are fine ना? कुलसुम? हाँ कुलसुम नहीं Yes, sir. है ना. अच्छा, अब उसके बाद देखिए NaNH2 से क्या होता है? Dehydrohalogenation, same as alcoholic KOH है ना. ये रिएजेंट को भी याद रखिए. दिस रिएजेंट कैन बी यूज्ड इन 1-2 रिएक्शन जहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है. ओके, सो विल गेट propene and here HBr peroxide. जैसे ही आपने 1-2 देखा तो 2 चीज आपको स्ट्राइक करना चाहिए, आइदर मार्कोनिकॉव और एंटी मार्कोनिकॉव, or anti-Markovnikov. And if you want to have Markovnikov or anti-Markovnikov, you have to make an alkene. And if you have to make an alkene, you have to use any dehydrohalogenating reagent such as alcoholic KOH or NaNH2. Huh? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. आगे बढ़े. Yes or no? Please tell me. Yes, sir. Okay. Ethanol to ethyl fluoride, ये तो कर लीजिएगा आप, है ना. Finkelstein reaction. Tell me a reagent एक बताइए Finkelstein reaction का. नहीं Finkelstein नहीं है. This Schwarz reaction. Finkelstein तो iodine लगता है. Tell me the reagent for Schwarz. क्या है अक्षय? आवाज नहीं आ रही. मैसेज में चैट. हाँ करेक्ट. हमजा, हिबा, आप लोग भी आंसर दीजिए. ठीक है, देखिए तो क्या होगा, सबसे पहले आप इथेनॉल लीजिए, CH3CH2OH, यू कन्वर्ट दिस टू SOCl2. ठीक है, उसके बाद आपको क्या मिल जाएगा? विल गेट अ CH3CH2Cl and then further what you will get, you will react this with AgF to make. आ गया? yes or no? Please tell me. Yes, sir. Done? Yes or no? Please tell me. Done, आगे sir. बढ़े. Okay. Propene to propine. Now this is very important. Okay. Now whenever you see triple bond, you remember NaNH2.
NaNH2 is your go-to reagent if you have double bond or triple bond. Okay, you have to make double bond or triple bond. NaNH2 is your go-to reagent. So first of all, what we will be doing, that means we have to have triple bond. Acha, when we have, for example, Br, then if we have one Br, then we get alkene. But if we will have two Brs, then what we will be getting? We will be getting alkyne. If we will do hydrohalogenation, dehydrohalogenation 2 times, then we will be getting alkyne. So देखिए, first reaction how it will happen. Br2 in the presence of CH2 or CCl4, that will be solvent. You don't have to worry about that. And you will write vicinal dibromide. This reaction we have done in my class. Now once we get this, I will react this with NaNH2. यहाँ पे ध्यान रखिए, we have a hydrogen here, we have a hydrogen here. React this with NaNH2. What will happen? One Br and another hydrogen will leave, and you will be getting the Br here, okay, with a Br here, and then one hydrogen will be still here because 1, 2, 3, 4 bonds, 4 bonds, right? 4 bonds. Yeah. Now, again, what we will be using the same NaNH2. Again, we will be using the same NaNH2. Now, when we use NaNH2, this hydrogen and this Br will be leaving, and you will be getting another one triple bond here. Okay, now you have double bond, then we will get a triple bond. Okay, we will get CH3, C, and CH. So the first reagent that we are going to use here is Br2 in the presence of CCl4. ठीक है, CCl4 is a solvent, please remember. Reagent नहीं है, भूल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है. Second reagent will be using 2 units of NaNH2. 2 units of NaNH2. We can't use alcoholic OH in the second step. Okay, you can use, यहाँ पे आप क्या use कर सकते हैं. In the first step you can use alcoholic OH, but alcoholic OH is not such a strong base that it can. यहाँ पे देखिए क्या होगा. You will have OH negative. So OH negative will come here and it will be repelled. Okay, that is why alcoholic OH is not used. We use NaNH2, which is a very strong base. It's a very strong base. Why it is strong? Because it has NH2 negative. NH2 negative, छोटा सा molecule, negative charge. Nitrogen is what? Nitrogen is the third number. Nitrogen is, it is not as electronegative as oxygen. It is very less electronegative as compared to oxygen. Nitrogen cannot hold the negative charge as easily the oxygen holds. That is why it will dump its electron and it will do dehydrohalogenation. चलिए, can I move forward? Yes or no? Please tell me. आगे बढ़े? Yes. ठीक है. Propene to 1 nitropropane. फिर से देखिए. डबल बॉन्ड. जैसे ही आपके पास ना, if you get any substituent, you are going from alkene कहीं से भी आप जा रहे हैं, and you are getting what? 1 nitropropane. That means you are going to less substituted carbon. Markovnikov, anti-Markovnikov, it will be used. Here what will be used? I can go. यहाँ से आप क्या बना सकते हैं? Second. Can I make? You will ask yourself. Can I make nitropropane from haloalkane? The answer will be coming. Yes, you can. What is the reagent and what is the substrate? So the substrate will be same thing, but here it will be what? Br. Okay. And what reagent can we use here? We can use AgNO2. Very good. Now, how to make this Br? How to make this Br? We will add here HBr in the presence of peroxide. सही है? First step. कुछ छूटा नहीं ना? HBr peroxide. Second step. AgNO2. Hamza, Hiba, Krishna, Kulsum, Seda, Rufi, Akshay. आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सुनो, please tell me. Yes, sir. Yes. Yes. ठीक है, फिर से देखिए एंटी मार्कोनिकॉफ है ना, एंटी मार्कोनिकॉफ. सो सी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन एंटी मार्कोनिकॉफ. कैन आई मूव फॉरवर्ड? यस और नो? प्लीज टेल मी. Yes, sir. आप बताइए. फिर से देखिए कितना सिमिलर है. यू विल आस्क योरसेल्फ,
Can I make alcohol? Can I make alcohol from haloalkane? The answer will come. Yes, you can. How? By using aqueous NaOH. Then you will ask how I will make this particular haloalkane using this particular substrate. I will be using HBr. In the presence of peroxide, absence of peroxide. Tell me, presence या absence? Present. Presence. Presence. See, देखिए आ गया आप लोगों को तो conversions. आ गया कि नहीं आ गया बताइए. Yes. अरे सेम है बिल्कुल. मतलब इतने सेम इतने सिमिलर इक्वेशंस रहेंगे. मतलब पैटर्न आप देख रहे हैं. एल्कीन है तो HBr आपको इस्तेमाल करना ही पड़ रहा है. कोई आपके पास और चारा ही नहीं बच रहा है. पेरोक्साइड रहेगा या नहीं रहेगा बस इसी का चॉइस है ना. यहीं पे अगर 2 ऑल रहता क्या यूज करते, पेरोक्साइड हटा देते, सेम रिएक्शन हो जाता 2 ऑल में. यस और नो? एवरीथिंग एल्स वुड बी सेम. इफ वी हैड प्रोपेन टू प्रोपेन 2 ऑल, तो 2 ऑल के लिए हमको ये चाहिए रहता Br. इसके लिए हमको क्या यूज करना रहता? जस्ट HBr. और उसके बाद हम क्या यूज करते? सेम NaOH या KOH, और फिर हमको क्या मिल जाता? OH मिल जाता. ठीक है. चलिए, let's move forward. Ethane, CH3, CH3 to ब्रोमोइथेन. अब कोई बता दो ये वाला प्लीज. वन स्टेप रिएक्शन. कैन वी प्रिपेयर haloalkane from alkane? Yes or no? अरे yes or no? Can we prepare haloalkane from alkanes? Yes, sir. What is the reagent that we are going to use? What is the reaction? What is the reaction? Br2. Br2 in the presence of kulsum. UV light. वेरी गुड. रिएक्शन मैप इस्तेमाल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस कुलसुम, टेल मी. Bromination, right? हाँ हाँ, हम वही पूछ रहे हैं आपसे. रिएक्शन मैप काम में आ रहा है ना? Yes. इज हेल्पफुल, राइट? सी, रिएक्शन मैप चाहिए कन्वर्जन्स के लिए. ओके, यू शुड हैव रिएक्शन मैप. व्हाट वी विल बी यूजिंग? Br2 in the presence of HNu. Halogenation, halogenation, free radical halogenation of alkanes. चलिए, let us move forward. Tolerant to benzyl alcohol. Now this is very important. यहाँ पे ध्यान से देखिएगा. Don't write anything. If you know benzyl halide, you will be knowing what is benzyl alcohol also. ठीक है? Benzyl halide पता है, benzyl halide पढ़ा है हमने. Same is benzyl. अगर यहाँ पे X रहता तो क्या हो जाता है ना? अब यहाँ पे आप एक बात बताइए, जो भी रिएक्शन हो रहा है that is happening on this CH3, yes or no? This carbon only, right? Yes or no? This carbon here, correct? हाँ या ना बोलिए. Yes or Yes, no? sir. Yes. Yes. Now this carbon is sp3. That means what? This is an alkane, correct? Yes or no? Yes, sir. And alkane से हमको क्या करना है? Alcohol. So we directly तो नहीं पता हमको, लेकिन बीच में अगर we will get haloalkane तो बन सकता है कि नहीं? Yes or no? Tell me. Yes. Yes, sir. बताइए, alkane से RX के लिए क्या यूज करेंगे? X2 in the presence of HNu. RX से alcohol के लिए क्या यूज करेंगे? Aqueous KOH या NaOH, है ना? So first of all what we'll do, see benzene ring का कोई रोल ही नहीं है यहाँ पे. That's what I am trying to tell you guys. Reaction is happening on the alkane carbon. Now here what we'll write? We'll write the first I will make something like this. Then I will make something like this. The reagents that I will be using is, to make this I will be using Br2 in the presence of HNu. To make this I will be using aqueous NaOH or KOH.
Done, yes or no, please tell me. Yes, sir. Ethanol to propane nitrate. This is also very easy. Ethanol to propane nitrate. और 3 कार्बन एटम्स प्रोपेन नाइट्रेट है ना. इसका तो हमको पता नहीं है. बीच में आप क्या लेके आना चाहिए? टेल मी, कैन आई मेक दिस यूजिंग haloalkene? You will say yes sir, we can. Br using KCN. I will ask, can I make alcohol? You say Br, है ना. Br नहीं यूज करते हैं, है ना. Cl यूज कर लेते हैं. SOCl2 से मस्त. We will get only. What will be using here? We'll be using here SOCl2. ठीक है. First reaction is. Second reaction is KCN. ठीक है. Write this down. अब देखिए nitriles. Now you have, it is important, and we will look at the reactions of nitrile that you have to remember. Done everyone? Yes or no? Please tell me. देख लिया सबने? Yes, sir. Right, next. Write these 3 reactions, important reactions of nitrite. We'll explain these 3 reactions, then we will do the further questions. लिख लिया आप लोगों ने? Yes or no? Please tell me. Done? Just a minute, sir. Okay. Done, sir. Let us see now. The first reaction. Nitrile में पानी डालिए, carboxylic acid. You add water on nitrile, you will get carboxylic acid. How? So I mean, you can. There are 2 water molecules that are used. It is complete hydrolysis here. So we use here hydrogen, hydrogen, and this gets double bond like this. और एक आपके पास होता है where you have bond like this. Can you see? NH3 and C double bond OH. So this type of reaction happens, and what do you get? You get carboxylic acid when you add water. Yes or no? Please tell me. सबको दिख रहा है? Can all of you see Yes, that? sir. Okay. Now see. Carboxylic acid आ गया. Next reaction is with RMGBr. Now here you will write what? देखिए, Grignard region को पानी के साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते. So we'll write this as first reaction, and then in second reaction, second step, we will add water. That means when RMGR is completely used, completely consumed, then only we'll add water. ठीक है, second step. First step क्या हो रहा है? RMGBr. Here we have delta negative. Remember this is R dash. R dash में delta negative. This is delta positive. So R dash will be here, and MGBr will be here. Okay. And here we have water. In water, what is going to happen here? We'll have oxygen here and hydrogen and hydrogen. Okay. So this bond breaks first of all like this, and nitrogen gets bonded with a Mg. एक bond रहता है carbon nitrogen के बीच में, and you get one bond with Cr. So you'll make R like this, R
CR डैश डबल बॉन्ड N एंड N के साथ MgBr आ जाता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, यू हैव वाटर मॉलिक्यूल, this bond break and then double bond forms here. Now please remember, if I have CH3CN and I want to go to CH3 C double bond O CH3, then I will use CH3 MgBr. Why? Because this CH3 is coming here. The CH3 of Grignard reagent, please look here, the CH3 of Grignard reagent is coming here, this CH3 है ना। वहीं अगर हमारे पास CH3CN ही है ना, I have to use CH3CN से हमको क्या बनाना है, CH3 C double bond O, जैसे you have to make some phenyl ring. ये phenyl ring कहाँ से आएगा, this will come from the phenyl magnesium bromide, ठीक है। यानी कि if you have to add anything on the nitrile carbon, then that R group should be on Grignard reagent. Okay, that R group should be on Grignard reagent. Next thing, LiAlH4, it is very easy. Two hydrogens come here, they attach CH2 NH2. Okay, LiAlH4 is a very strong reducing agent. It will add hydrogens on the unsaturation. चलिए, all of you have written this. Let us look at the next question. देखिए, bromomethane to propanol. So whenever you see propanol like this, and you see what bromomethane, so what do we have here? Addition of carbon is happening. CH3 Br say you have to get CH3 C double bond O CH3. Now once you know that nitrile can be used, then you will think, okay fine, I can make this product using CH3 CN. How? This CH3, that is extra CH3, it will come with Br, CH3 MgBr. Okay, in the first step. Second step में पानी डाल दीजिए आप H2, you will get this product. How can I make this product? CH3CN, I can just use what? KCN. Yes or no? When ketone is formed from less number of कार्बन एटम्स, है ना, यहाँ पे एक कार्बन था, 3 कार्बन हो जाते हैं. Think of KCN and RMgBr, Grignard reagent. Okay, RMgBr. जितना think of लिखा रहे हैं ना, this will be used in all of the conversions in all the chapters. Done everyone, is on this me? We are going from 1 carbon to 3 carbon, so obviously there is an increment. Done, sir. Hamza, Hiba, Akshay, Kulsum, done? Yes, sir. Yes. Okay, right, next. Ethyl chloride to propanoic acid. Again, देखिए 2 से कहाँ जा रहे हैं, 3 में जा रहे हैं. Increment of 1 carbon atom, so obviously you will be going via KCl. Ethyl and propanoic acid तो बना सकते हैं हम nitrile से, है ना? So we'll write ethyl chloride. What is ethyl chloride? Cl. Propanoic acid is double bond O OH, है ना? 1 carbon, 2 carbon, 3 carbon and OH. This can be made using CH3. एक काम करते रुक जाइए आपको. Ethyl chloride CH3 CH2 Cl, propanoic acid CH3 CH2 COOH. इसको बनाने के लिए क्या चाहिए? CH3 CH2
CN। ये कैसे बन जाएगा, यहाँ पे पानी डाल देंगे वाटर, एंड वी कैन मेक दिस यूजिंग KCN। Done guys, listen up, listen me. देख लिया आप लोगों ने, चलिए बेंजाइल अल्कोहल, अगेन बेंजाइल अल्कोहल, याद रखिए एल्केन है यहाँ पे, भले ही बेंजीन हो, यहाँ फिर बेंजाइल अल्कोहल CH2OH 2 2 phenyl ethanoic acid, please remember C 2 phenyl ethanoic acid, ethanoic acid CH2COOH, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, सेकंड कार्बन पे फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन पे फिनाइल ग्रुप, ठीक है, नाम नहीं फंस जाइएगा आप लोग, ठीक है, तो ध्यान रखिए आईपैक नोमेनक्लेचर अच्छा होना चाहिए। ओके, नाउ दिस कैन बी मेड, देखिए सारा रिएक्शन कहाँ पे हो रहा है, ऑल द रिएक्शन इज हैपनिंग, दिस ROH से जाइए आप SOCl2, मिल जाएगा आपको RX, उससे चल जाइए आप RCOO, नहीं सबसे पहले RX के बाद KCN, KCN से मिलेगा आपको RCN, उसके बाद आप डाल दीजिए पानी, पानी से मिल जाएगा एसिड, ठीक है। फर्स्ट रिएक्शन दैट विल बी डूइंग SOCl2, एक स्टेप बढ़ गया बस, है ना, यहाँ पे आपके पास क्या था, हालोअल्कीन था, हालोअल्कीन बनाना पड़ रहा है, दैट्स इट, नथिंग एल्स, वी हैव मेड अवर हालोअल्कीन CH2Cl, further reaction with KCN is going to give me CH2CN, डाल दीजिए पानी, बन जाएगा एसिड, है ना। आई होप यू कैन सी दैट द मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस आर सिमिलर, बस एक स्टेप आगे एक स्टेप पीछे हो जाता है, यस और नो? Yes, sir. Yes. है ना, तो घबराइए नहीं कन्वर्जन से। कितना कर लिया हम लोगों ने, कितना कर लिया, स्लाइड नंबर नहीं डाला, स्लाइड नंबर डालना चाहिए इनको। देखिए कुछ मिस्टेक हम भी कर सकते हैं, एक बार देख लीजिएगा सारे रिएक्शन सही है नहीं। आगे बढ़े, शुड आई मूव फॉरवर्ड? Yes. Sir. Just a minute. अच्छा, Done, sir. इथेनॉल टू ब्यूट 1 आ गया, है ना। देखिए हम इसलिए बोल रहे थे NaNH2 इज वेरी इंपॉर्टेंट, NaNH2 इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ ethanol, what is ethanol? इसमें please don't write, I will write it first and then you will write, okay? ethanol to but 1 सबसे पहले इसको तो कन्वर्ट करते हैं हालोअल्कीन हालोरीनी में, उसी के बाद हम लोग अनसैचुरेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इथेनॉल, I'll convert this to SOCl2, using SOCl2 I'll convert this to chloroethane, okay, chloroethane. Then I will be using here, what I will be using here, डिहाइड्रोहालोजनेशन कराते हैं इसका, ठीक है, भर के डिहाइड्रोहालोजनेशन कराते हैं। CH2Cl आ गया, है ना, Cl आ गया, इसके बाद इसका ये करा देते हैं, Cl से बना देते हैं पहले अल्कोहलिक KOH, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन गया, है कि नहीं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन गया। नेक्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू डू, नेक्स्ट हम ये करते हैं, इसमें Br2 ऐड करा देते हैं,
बी आर एंड बी आर, ठीक है, बी आर एंड बी आर हो गया। अब यहां से हम लोग बनाते हैं इसका सी एच, अच्छा सी एच टू बी आर, सी एच टू बी आर, हाँ ठीक है, सी एच टू बी आर, सी एच टू बी आर, ठीक है। इसमें हम लोग अगर 2 टाइम NaNH2 यूज कर लेंगे, then what I will be getting CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। कोई दिक्कत है सोनो प्लीज नहीं, नो प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम? अच्छा हाँ, रिएक्शन सब देख लीजिएगा, कोई दिक्कत हो तो बताइए। दिस इज द फर्स्ट रिएक्शन। सेकंड रिएक्शन, यहां से हमने क्या किया, अल्कोहलिक KOH। अभी प्रोडक्ट नहीं बनाया, प्रोडक्ट नहीं बनाया, ब्यूट 19 बनाना है, अभी इथाइन नहीं बनाया। आगे बढ़े या सोनो प्लीज नहीं? यस सर। देखिए, अब इसके बाद जो एक रिएक्शन है ना, प्लीज रिमेंबर आई हैव मेड दिस इथाइन यूजिंग इथेनॉल ओनली। हमने कहीं और बाहर से रिएजेंट नहीं लिया, सिर्फ रिएजेंट डाले, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने नहीं लिया। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, I am going to react this with NaNH2, and I will be getting here CH triple bond C negative Na positive, ठीक है। अब ये बताइए आप, इस तरह का रिएजेंट, यू लुक इन योर रिएक्शन मैप, लुक एट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जब हमने इस तरह से एरो बनाए हैं, देयर इज वन रिएजेंट दैट आई हैव यूज्ड लाइक दिस हियर, देखिए है या नहीं है। You will have something like this, R C triple bond C negative Na positive, nucleophilic substitution in which we have mentioned so many reactions, nucleophilic substitution के, वहां पे देखिए नोटबुक में दिखा, लिखा है क्या आप लोगों यस को? सर। ये लिखा है ना, है। अब उसी का रिएक्शन देखिए हमारे पास, ये भी हमने बनाया, वी हैव दिस ऑलरेडी। ये जो अल्कोहल था, इसको आधा लेके आप क्या बना लीजिए, इससे आधा लेके आप ये बना लीजिए, ओके, एंड आधे से आप इसका रिएक्शन करा दीजिए। सो वी हैव मेड दिस CH ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव Na पॉजिटिव प्लस CH3 CH2 Cl, तो बस क्या होगा, यहाँ Cl निकल जाएगा और ये चीज ऐड हो जाएगी CH ना, तो ये विल ऐड लाइक दिस CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2 CH3, है ना, तो ये क्या हो गया, 1 2 3 4 ब्यूट 1 9। इथेनॉल से आप बनाइए SOCl2, आधा SOCl2 आप ऐसे ही रख दीजिए, सॉरी क्लोरोइथेन को ऐसे ही रख दीजिए, बाकी से आपको क्या बना लेना है, CH ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव Na पॉजिटिव, और फिर इन दोनों का रिएक्शन करा देना, आपको क्या मिल जाएगा, CH ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3। अब ये शायद आपका पहला सवाल है, एनसीईआरटी में देखिएगा तो पहला कन्वर्जन कौन सा है, if someone has NCERT, look at the first conversion, कुछ 11 12 या 13 नंबर होगा क्वेश्चन जिसमें कन्वर्जन है, 10 कन्वर्जन में देखिएगा, इन 10 कन्वर्जन। दिखा एनसीईआरटी में किसी को? Sir, in second one is there. सेकंड वन, Yes sir. सेकंड वन I mean the second subpart sir. I mean in NCERT only. एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर कौन सा है? Question number 10, second part. सेकंड क्वेश्चन ये है ना। So you understand that like in NCERT the pattern of question, I mean the sequence of question is not very good. Second question में उन्होंने दे दिया ब्यूट 19 और ट्रिपल बॉन्ड लड़के ने देखा ही नहीं है हैलोल्किन चैप्टर में। आपको भी पता होगा, ये जो हमने बताया आपको ढूंढने के लिए, ये ढूंढने पे मिला है, आपको याद तो नहीं होगा किसी को भी दैट ये भी इस तरह की कुछ चीज हमने देखी है हैलोल्किन चैप्टर में, ओके। तो कन्वर्जन में हम हमेशा बोलेंगे अल्कोहल फिनॉल ईथर्स में भी आई विल गिव यू द सीक्वेंस कि कैसे आपको कन्वर्जन करना है, ओके।
Done everyone? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. Let's move to the next one. अगला जो है ना आपका, that is ethanol to bute 2-ine. Ethanol to bute 2-ine. तो कुछ स्टेप्स आपको पता है यहाँ पे क्या होंगे, सिमिलर होंगे, yes or no? Some steps will be similar ना? Yes, sir. देखते हैं इसमें. First of all, we have to make ethanol. Ethanol लेते हैं. OH, CH3, C triple bond C triple single bond CH3. इसमें क्या यूज किया जाए? इसमें चलते हैं वैसे ही जैसे चल रहे थे हम लोग. ओके, अब देखिए एक यहाँ पे आपको हाइड्रोजन का रिएजेंट शायद इस्तेमाल करना पड़ जाए. फर्स्ट रिएक्शन विल बी डूइंग इज इट व्हाट? टेल मी. हाइड्रोजन बनाने के लिए क्या इस्तेमाल करें? टेल मी द रिएजेंट. पिछला रिएक्शन देख के बताइए. SOCl2. वेरी गुड. SOCl2 क्या बन जाएगा? क्लोरीन. उसके बाद क्या करेंगे हम इसका डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन क्या इस्तेमाल करें बताइए? अल्कोहलिक KOH है ना? Yes, sir. और NaNH2. अल्कोहलिक KOH और NaOH कुछ भी इस्तेमाल कर दीजिए आप. डबल बॉन्ड आ गया. इसके बाद हमको क्या करना है? डबल बॉन्ड में दोनों जगह Br लगाना है. Br2 है ना? यहाँ लग गया Br और यहाँ पे लग गया Br. ओके, देन आई विल रिमूव बोथ ऑफ दीज Br है ना? आई विल रिमूव both of these Br using what? NaNH2. NaNH2. काम करते हैं इसको. जगह है अभी. अरे ऐसे ही क्या ना कि नहीं किया ऐसा है ना? दो NaNH2 इस्तेमाल किया. हाँ ठीक है, सेम तो है. आप लोग घबराई गए, बिल्कुल चुप हो गए, बिल्कुल हम घबरा गए. NaNH2 CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH. इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? अच्छा, वेट अ सेकंड, सॉरी, माय बैड. तीन कार्बन कर दिया हमने ना. बोलिएगा तो आप लोग. माय बैड. अल्कोहलिक KOH बनेगा आपके पास Br2. एक Br यहाँ, दूसरा Br यहाँ, दो कार्बन ही है अभी तक. फॉलोड बाय NaNH2. विल बी गेटिंग व्हाट? दोनों ब्रोमीन निकल जाएंगे तो ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा. तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH. अब इसके बाद हम लोग इसमें डालेंगे फिर से NaNH2 दो बार. ओके, यहाँ पे भी दो बार डाला NaNH2, यहाँ पे भी दो बार NaNH2. जब देखिए पिछली बार हमने क्या किया था, एक NaNH2 डाला था तो वी गॉट ओनली वन नेगेटिव एंड हियर वी हैड CH. दो NaNH2 डाल देंगे तो क्या हो जाएगा? दोनों में C नेगेटिव, ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव, यहाँ पे भी Na पॉजिटिव और यहाँ पे भी Na पॉजिटिव. ठीक है ना? अब आपको दिख रहा होगा क्या कर सकते हैं यहाँ पे. अगर हम यहाँ पे CH3 I से रिएक्ट करा दें तो एक CH3 क्या हो जाएगा? इसके पास चला जाएगा और एक CH3 इसके पास चला जाएगा. ठीक है, हालो अल्कीन है ना? हालो अल्कीन है. एक CH3 जो है आपका यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव, वन कार्बन नेगेटिव, इट विल अटैक ऑन दिस CH3 है ना? इसी तरह से दूसरे CH3 रहेंगे, ये भी कार्बन अटैक कर देगा है ना? तो आपको दिख रहा है कि इस कार्बन के पास CH3 लग गया, इस कार्बन के पास भी CH3 लग गया. चलिए नोट डाउन कीजिए इसको, इथेनॉल ब्यूट 2 आइन को. देखिए इन दोनों को साथ में रखिएगा. ठीक है, इन दोनों को साथ में रखिएगा. तो ये दोनों जो है ना, इन दोनों का आपको याद ही करना पड़ेगा. या तो 10 बार लिख लीजिए, याद हो जाएगा.
So one of the longest conversions. हाँ, तो हम क्या बोले थे, ये रिएक्शन है ना आपका, दिस रिएक्शन हियर इट इज फ्रॉम क्लास 11। बाकी सारा रिएक्शन आपका कहाँ से है, क्लास 12 से ही है। ये रिएक्शन SOCl2 अल्कोहलिक वेज Br2 वाला भी है, और ये वाला भी रिएक्शन तो है, SN का रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दिस इज राइट। सो ऑल ऑफ दीज आर फ्रॉम क्लास 12, ये क्लास 11 का है, इसी वजह से नहीं आता। चलिए, डन एवरीवन, यस और नो प्लीज टेल मी। लिख लिया क्या, क्या लिख रहे हैं, लिख लिया? yes sir. बेंजीन टू 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, बहुत ही आसान है ये। बेंजीन लेना है, क्या क्या लगाना है इसमें, एक बार लगाना है Br और लगाना है नाइट्रो। ध्यान रखिएगा, नाइट्रो क्या है, मेटा डायरेक्टिंग, मेटा में भेज देगा तो नाइट्रो पहले मत लगाइएगा। और ब्रोमीन क्या है आपका, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, ONP है। पहले Br लगाएंगे फिर NO2 लगाएंगे, क्यों? बिकॉज इफ आई विल पुट NO2 फर्स्ट तो Br कहाँ लग जाएगा, मेटा पोजीशन में। पहली बात समझ में आ रही बात की नहीं, जैसा नो क्लास 11 में था ये सब, Yes, sir. Yes, sir. है ना, क्लास 11 में था ये सब। Here we have Br2 FeBr3, मिल गया Br। नाइट्रेशन करना है इसका, कंसंट्रेटेड HNO3, कंसंट्रेटेड H2SO4, बस। चलिए छापिए इसको। लिख लिया? Let me know when you are done. Done, sir. एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन, बहुत ही आसान है ये रिएक्शन, तो हम लोगों ने किया हुआ है, स्टैंड में रिएक्शन का एक पार्ट है ये। फर्स्ट ऑफ ऑल विल मेक बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड, यहाँ डाला NH2, द रिएक्शन विल बी विद NaNH2 NaNH2 in the presence of HCl at 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, ठंडे ठंडे पानी में। N2 plus Cl negative, अगर क्लोरोबेंजीन यूज करें तो CuCl2 या CuCl इस्तेमाल करेंगे HCl के प्रेजेंस में, है ना। सैंड में रिएक्शन है ये वाला। बस हो गया। आगे बढ़े, आगे बढ़े तो बताइए। ये सुनो, बढ़े ना आगे। Yes, sir. Yes, sir. तो क्या आप लोग, क्लोरोबेंजीन टू नाइट्रोफेनॉल, क्लोरोबेंजीन टू नाइट्रोफेनॉल, देखिए क्लोरोबेंजीन से कहाँ जाना है, पी नाइट्रोफेनॉल, है ना। तो OH तो कभी आपका OH जो आएगा दिस विल बी फ्रॉम SN न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और NO2 कहाँ से आएगा, फ्रॉम SE। तो पहले SE कराते हैं, नहीं फर्स्ट विल डू SE, जिससे क्या होगा, NO2 डालने से आपको पता है, वी हैव लर्नड दिस इन द लास्ट लेक्चर ना, लास्ट लेक्चर, दैट इफ यू ऐड NO2 देन इट विल गिव यू SN, है ना। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऐड करते हैं तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दिखाता है। सो विल हैव हियर concentrated HNO3, concentrated H2SO4, Cl लग गया, यहाँ पे लग गया NO2,
बाकी इसके रिएक्शन के लिए यू विल हैव एक्वस KOH एंड यहाँ पे ऐसे हीट दिखा दीजिए बस आप। डन गाइस, yes or no, please tell me. डन सर। आई थिंक बिल्कुल आखिरी पहुंच गए हम। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल टू आयोडोफॉर्म, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल 3 कार्बन अल्कोहल OH से आयोडोफॉर्म, आयोडोफॉर्म मतलब I3CH, इसको लिखिए पहले आप। ठीक है, ये रिएक्शन जो है आपको, ये रिएक्शन आपको याद करनी पड़ेगी। देयर इज नो अदर केस इन दिस रिएक्शन, यू हैव टू लर्न दिस इज वन मोर रिएक्शन दैट यू कैन राइट, जिससे दिस इज मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ आयोडोफॉर्म। सो व्हाट इज द रिएक्शन? यू हैव आइसोप्रोपेन अल्कोहल प्लस 4I2 in the presence of sodium hydroxide. It will give you, अरे रे हमने तो उल्टा ही लिख दिया यहाँ पे, अच्छा हमको लगा यहाँ H लिखा हुआ है, ठीक है, everything is fine. CHI3 plus CH3CONA plus NaI plus H2O, ठीक है। तो इस रिएक्शन को लिखिए, ये तो आपको याद करना पड़ेगा, ये एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। द रिएजेंट इज I2 and sodium hydroxide, so use here I2 and NaOH, ठीक है। ऐसे ही लिखना पड़ेगा, बस आपको इतना ही लिखना पड़ेगा, डोंट हैव टू राइट एनीथिंग एल्स। Done? Yes or no, please tell me. डन सर। Aniline to phenyl isocyanate. लास्ट के दो रिएक्शन जो आपको याद करने पड़ेंगे, बिकॉज दीज आर एप्लीकेशंस और केमिकल रिएक्शंस ऑफ पॉलीहाइड्रोजन कंपाउंड्स, ठीक है। यहाँ पे क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल होता है। वी हैव हियर NH2 plus CHCl3 in the presence of alcoholic KOH, ठीक है। हल्के से हीट में it will give you phenyl isocyanide plus KCl मिल जाएगा और आपको H2O मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको छाप लीजिए, बस ये लास्ट था, आपको लगता है इसके बाद कुछ नहीं है कुछ।